let's talk about Sushant the actor, because I think we should remember Sushant as an actor, not a man of great potential who there are a million theories of why he killed himself, not because the man who was depressed. Because my mind is not leaving his image of Yeah. first day, him coming to me and suddenly finding him touching my feet. Everything's Okay, all great. yeah. The gods of technology are on our side today. They usually are Yes, sir. not. Yeah. Right. How are you, sir? I guess all of us, we are extremely sad about Sushant, and Right. he sits in our dreams, it's a sad thing. And Manoj, let's talk about Sushant. Obviously, we have to talk about what do creative people face? What is this thing that we face? I mean, I have often faced the idea. I don't know if it's depression, but we have creative highs and we have creative lows. And sometimes you're on such a creative height that you can achieve anything in the world. I'm sure as an actor Right. you experienced it. You Hmm. give a shot and you achieve anything in the world, and then sometimes I have such creative lows that I think, oh my God, I can't think of anything. But Right. that's our thing. But I think that we should let me ask you, because you did Son Chidiya with such a wonderful film with Sushant, and let's talk about Sushant the actor, because I think we should remember Sushant as an actor, not a man of great potential who there are a million theories of why he killed himself, not because the man who was depressed, but the man who was potentially this fantastic actor, Yeah, that's amazing how. actor. Because Yeah, that's how I would like to remember him, and that's what both of us would like to emphasize on, and that's what uh, you know, makes us smile sometimes and makes us really feel sad. Uh, because whenever I'm thinking about, because my mind is not leaving his image yeah, of first day, him coming to me and suddenly finding him touching my feet. And one thing just strikes me that all the perceptions that people were throwing it around and or floating around about him, that one gesture of him, it just questioned everything. Not that he touched my feet. I just saw a guy, coming from the touching in my feet. Somehow, he said so many things about his background, where he came from. He was carrying all of that, and from there, our journey of knowing each other started, as an actor, as a person, um, and the, and then he said that, sir, I'm also from Bihar, and then he started talking about his village, and then he started talking about our Bandit Queen. I'm feeling so great that we are shooting in the same location that Bandit Queen was shot, and then every day, looking at him from a distance, um, working on the shot, working on his craft, working on his approach to get that final, perfect run or the jump or the dialogue delivery or this correct emphasis on the word. One day I remember telling him that, Sushant, if you mind if I tell you something, if I have some observation, and he said, no, sir, please tell me. And three, four times I tried to give my inputs to his performance, or or to the way he was holding the gun, all of these things. And every time I came up with a suggestion, he was so grateful, Shekhar. I mean, rarely you see actors uh, feeling so grateful for those small suggestions that you were
giving to your co-actor, and he was really taking it and thinking about it and doing it, and then coming to you and telling you that yes, you were right, and it's feeling right. I'm feeling good about the shot. And then looking at his side table on the location, where you see two books on quantum physics, okay, him flipping through sometime, and that telescope that he's carrying, and flaunting it to everyone. So he's like a child telling everyone to join in, and look, gaze at the galaxy like a curious child. So these are for me, him getting so happier and jumpy when I treat him with the mutton that I used to cook on the set, or the food I used to cook on the set. So for me, these are the images, Shekhar. I can't take it away. Yeah. For me, it's so disturbing. For me, it's so. Yeah. I'm finding it so difficult to come to terms with the fact that those images are going to be of the past. You know, it's Yeah. 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 it's Yeah. Yeah. so I remember him that way, and when I see the cacophony around me, um, to people trying to find the reason behind his suicide, and everybody has their own theory, and in the end, we are not talking about the man and the contribution that he has made at such a young age. You know, the journey that he took and where he's reached. Um, this this is the I'm feeling is leaving very bad taste in my mouth. I don't know. Shekhar, just tell me one thing. Why why we start uh, why we start on such a note whenever there is a death? Why we start on such a note? Why can't we celebrate the person? Why can't we remember the person that the person that he was? In this case, Sushant. Um, why can't we? You know, Why can't Manoj, we there is a grieve? thought Why can't process. we grieve? Yeah. Yeah, Yeah. I think, Manoj, part of us loves drama. And then because we are in the movie business or in anything, any business that has a very high profile, people look for drama. And so right now we are going through the phase where everybody is talking, it's dramatic. And I'm hoping that this dramaticness of it all will go away and settle down in a few days. We forget very easily. We forget yeah, we dramatic do. events very easily. Tomorrow, there'll be some other case, not suicide, hopefully, but something else will happen. Tomorrow, people's attention will get there. We are short-term attention span people. This is what social media has made us, and this is what our life has gone. अरे आज क्या हुआ अच्छा था अरे ये हो गया ओए 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 यार इसके बारे में लिखो जल्दी अटेंशन लो ये क्या हो गया और इसके बाद अच्छा ये हो गया अरे 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 our media goes like that. Our mind goes like that. Gone are the days that the mind was kind of settled. But hopefully, with somebody like Sushant, the mind will settle. And when it settles, we will watch his films again and again. And we'll understand what he brought to this business. I mean, it's happened. It's happened to me before. I worked with a fantastic actor called Heath Ledger. And I did one You of his did. first films. Yeah. Yeah. And I was in New York and we were talking about a film that we were going to meet the next day. And we were discussing a film called The 9 O'Clock War. And he was going to play the lead. And he called me and he said, Shekhar, mind if you don't meet this evening? Because I'm a little jet lagged. Let's meet tomorrow. It's okay. And so he said, call me at 9:30, just wake me up. And I said, then at 9:30 in the morning, I said, oh my God, I shouldn't really wake him up. He's jet lagged. And around 11:30, the friend I was staying with said, listen, Shekhar, sit down. I have something to tell you. He said, so what? He said, Heath Ledger's dead. And I said, hang on. I just spoke to him. And he was gone. But now we remember Heath for the films he did, for the performances he did, for the Joker that he played, which will be ever memorable. And I'd like to remember Sushant
the way as you know, the first time I met him, I thought I was meeting a child, just a child. He Yeah. was couldn't. He was bouncing up and down, so excited that he was going to work with me, so excited that he was going to talk about Pani and do Pani and play that character. And the great thing about Sushant that I noticed that acting did not stop with rehearsing the lines or reading the script or remembering the lines or doing the movements. His interest went way into, Acha, what will the set look like? Every time I had a production design meeting, he was there. Every time I had a meeting with the DOP, he was there. Every time I had a VFX meeting, he would be there. And when we would rehearse, the name of the character was Gora. And he would say, sir, Gora mil nahi raha abhi. Gora mil nahi raha. Then he would rehearse it again. He said, I said, नहीं बहुत अच्छा है सुशांत. सर अच्छा है क्योंकि मैं सुशांत सिंह कर रहा हूँ, गोरा नहीं कर रहा. ये गोरा कैसे मिलेगा मुझे? तो रात के 2-2, 3-3 बजे मुझे फोन करता था और कह रहा था, 3 बजे मुझे फोन आया, मुझे पता 3 बजे फोन आया तो सुशांत का ही होगा. सर आ जाओ. आ जाओ. सर एक आइडिया आया, अगर गोरा हमेशा कुछ ऐसे देखे या कुछ तिरछी नजर से देखे जब भी, तो क्या लगता है अलग होगा? छोटी 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 बातें लेकर, रोज रात को छोटी छोटी बातें लेकर घुस गया वो अंदर, वो स्क्रिप्ट में घुस गया, वो कैरेक्टर में घुस गया. It becomes an addiction. You know that, Manoj, better than anybody else. Acting is not about acting. Acting is you are addicted when you become the character. मुझे याद है बैंडिट क्वीन में सीमा विश्वास को कितने लेक्चर दिए मैंने फिल्म के बाद कि तू फूलन देवी नहीं है, तू फूलन देवी नहीं है, तू फूलन देवी नहीं है. कितनी बार मुझे उसको बोलना पड़ा कि देख तेरी जिंदगी अलग है, तू अलग है, तू सीमा विश्वास है, तू छोड़ दे अभी. इतनी वो इंटेंसिटी जब आ जाती है ना, तो दैट इज एन एडिक्शन, दैट इज अ हाई. तो उसमें वो देखा मैंने सुशांत में, वो एडिक्शन, कांस्टेंट एडिक्शन, कांस्टेंट एडिक्शन, उसकी पूरी जिंदगी. सब मुझे लगता है कि गोरा, क्योंकि पानी की फिल्म है, ये लोअर सिटी में है जहाँ पानी कम है, तो कहते सर 1 हफ्ते के बाद मिलूंगा. 1 हफ्ते में ही वुड बिकम स्किनी, कंप्लीटली स्किनी एंड कम बैक टू मी. सर देखिए, आज देखिए मुझे, मैं गोरा हूं ना, चलिए थोड़ी तस्वीरें लेते हैं और कैमरा के सामने कुछ करते हैं. तो यार 3 महीने हमने किया ये, 3 महीने. तो वो आई काइंड ऑफ फेल इन लव विद हिम, एज यू डू. इतना प्यार हो गया मुझे उस लड़के से कि ये लड़का, how much he gives, how much he gives, how much he gives. तो कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो उसके साथ काम नहीं करना चाहेगा? क्योंकि अगर कुछ कमी रहेगी तो डायरेक्टर में है, इसमें नहीं रहेगी, इसमें बिल्कुल नहीं रहेगी. ऐसा एक्टर था वो. और 3 महीने ना मैंने फिल्म बंद हो गई, बहुत रोया वो. बंद नहीं हुई, when he realized he wasn't doing the film, मैं भी रोया. वो रोता था तो मैं भी रोता था साथ साथ, क्योंकि I was also passionately and deeply involved with that. तो है यार, हमारी जिंदगी कुछ ऐसी होती हैं, ups and downs and ups and downs. और ये जो लफ्ज हैं डिप्रेशन, और ये ऐसा नहीं मैं कह रहा कि डिप्रेशन नहीं होती, हाँ? मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये डिप्रेशन एक लफ्ज है जो जिसके साथ हम खेल लेते हैं. As creative people, it's a emotion that we can play with, and we need to bring it. Sometimes even I, as an actor, would bring it on. Right. जब मैं सुशांत की बात कर रहे हैं, लेकिन बैंडिट क्वीन पे जाता हूँ तो रेनू सुलूजा मेरी एडिटर थी. तो बैंडिट हमारा क्या है कि मैंने पूरी फिल्म शूट की, उसके बाद जाकर पूरे रशेस देखे, ड्यूरिंग देखे ही नहीं. तो मैं रेनू से कहता था कि तू एक रील एडिट कर ले और उसके बाद मैं देखता हूँ, क्योंकि शॉर्ट बाय शॉर्ट मुझे कुछ समझ नहीं आएगी, तू एडिट कर एक पूरी रील, टू यूज योर इंटरप्रिटेशन. तो मैं दूसरे कमरे में जाके चीखने लगता था, चिल्लाने लगता था. और रेनू कहती यार ये ऐसा डायरेक्टर है, दूसरे कमरे में जाकर चीख चिल्ला क्यों रहा है?
and I would come out and say, "अब दिखाओ मुझे." तो एकदम से पूछा, तो क्या करते हैं दूसरे कमरे में जाके? I said, "यार, during the shoot, I was angry. I want to be angry when I'm watching the edit. नहीं तो how can I judge?" So those are the kind of lives you and I lead. Right. We push ourselves, and Sushant would always push himself. Yeah. In every little way, every cell of his would be involved. How can you Right. come out of that easily? You can't. But tell me, I mean, I only rehearsed and rehearsed and rehearsed and got to know him well, and we'll talk about his philosophy and his addiction to quantum physics and astronomy and Stanford. But Pehle, tell me something about you shot with him. I wasn't lucky enough to shoot with him. क्या लगता था कैसे? Did he rehearse a lot? Oh, but he used to rehearse. But he used to. I used to see him doing it alone. At times he used to be just going in the corner and rehearsing in his mind and prancing around and restless. Quite restless in his body language. Um, but this is what fascinated me, not about Sushant or about any other actor who is actually restless, who is questioning his own preparation, who's questioning uh, uh, the thing that he's going to do, and he's trying to find the right thing. There's nothing called right thing, but as a creative person, you are always trying to find more and more and You've frozen. yeah. Huh. So so Good. so looking for the answers uh, was the hallmark of uh, of Sushant. This is what I have seen. Uh, be it about astrology, be it about astronomy, or quantum physics, or the ways of the people, in the industry, ways of the world, the relationships, uh, human conflict, all of these things we used to talk about, and he used to listen to me so intently, as if he was hearing these things for the first time. Um, so for me, those are the things that I remember quite clearly about him, and that is why I'm finding it so shocking that somebody who was so curious to know about not only about this world, this planet, but also so many other planets. He was so curious. He was so curious. Uh, but I somehow feel that we on the set, on the location, we actors are only looking at the other actor. Sometimes we fail to look at the human being who is playing that character, because we are also so much into the role that we are in, that we forget that there is a person who is doing it. Let's find out the person. Uh, it's, the laughter with which that used to throw at you, on any joke that I had to tell, or any past incident that I used to narrate and explain in a funny way, and everybody used to laugh. But Sushant used to be the loudest, you know. So, where I'm feeling bad, that somewhere I should have sat with him alone. I should have, you know, uh, had a one-on-one chat with him, just to understand where he comes from. Uh, what does he think? What are his definition about things in life? How he perceived this business? How he perceived himself as a person, or his journey, or anybody else's journey? That's how you understand the person. I think Yeah. somewhere, uh, or we didn't get that much time, but whatever time I got with him, uh, I still remember him calling me and telling me, reminding me that, sir, you have to cook the mutton. I'm coming over to your place. You know, I said, you can come over to my place. It's just that I'm shooting, but the moment I cook that mutton, I'll definitely call you.
This is what these are the things. These are the things which I remember. Uh, as an actor, I was quite mesmerized in the manner he pulled off Dhoni. Knowing the Yeah, fact, Neeraj Pandey, the director, is a very good friend of mine. He told me that this boy never played cricket, and he came in, he mastered the craft, and he became Dhoni. He actually became Dhoni. His walk, his talk, his play, everything. He's done it so well, so perfectly yeah, well. yeah, Um, for me, his contribution is that he's coming from Bihar, coming from a middle class family, from Patna, or or his grandfather from some district there, and be on top of the game. You know, like uh, star system that I completely hate. I don't agree with in the manner the ratings happen, in the manner uh, the trade is the business is analyzed, and business the statistics are thrown on your face. I don't like it, but still, he was on top of that. He was on top of that. He was as good as anybody. Rather, I would say better. Uh, and the journey, the journey is something that one should be proud of. I was very proud of his journey. I come from the same state, and I come from a farmer's family, so I could relate to his journey. I could relate to his restlessness. I could relate to all the conflict that he was going through. I somehow felt that he would, whatever the questions that he had, he will find the answers on the way, because this is the way, life gives you answers. But I didn't know that yeah, the life will be ended so abruptly. yeah. I know, because answers, there are no definitions. There's Yeah, no defined answer. And every day that you live, and the next day, the answer changes because your question changes. You think you're asking the same question, yeah, but you've lived another moment, and your question, the nature of your question changes. Therefore, the changes. nature of the answer changes. And that's Yeah, what life is all about. yeah, And I was amazed at we did a session at Goa at IFI, and we decided that we will keep it no hold bar, you know. और वो क्वांटम फिजिक्स की बात करता था, right. और यू राइट, क्यूरियोसिटी इतनी थी, और मैं तो सालों से क्वांटम फिजिक्स ढूंढ रहा हूँ. अगेन, क्वांटम फिजिक्स की कोई आंसर होता नहीं है. क्वांटम फिजिक्स में यही कहते हैं कि एक पार्टिकल है जो यहाँ से आया और यहाँ गया, लेकिन वहां पहुंचने से, यहाँ जाने से पहले वहां पहुंच गया. आप उसको देख सकते हैं, अभी तो यहाँ से निकला नहीं. तो इसके बारे में बात करते रहते थे कि कहाँ मिस्टिसिज्म और कहाँ क्वांटम फिजिक्स एक दूसरे से जुड़ जाती है. हाउ कैन अ पार्टिकल बी एट पॉइंट बी बिफोर इट्स लेफ्ट पॉइंट ए? तो उसका यही आंसर है कि वो पार्टिकल सब जगह है, जहां आप देखते हैं वो उसी जगह है. सो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द होल यूनिवर्स. द होल यूनिवर्स इज क्रिएटेड इन योर इमेजिनेशन. जो आप इमेजिन करते हैं वो है. एंड दीज आर द थिंग्स ही यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली ड्रीम अबाउट, constantly ask me questions about. फिर मैं कहता था चल चल यार, चल अभी गोरा पे बात करते हैं, let's go back to it. But Right. he was one of the most curious persons I've ever met. Curious. And for an actor, that was amazing. I've never met an actor like that. I've never met a man. और आप बॉलीवुड स्टार्स की बात करते हैं, I agree with you. I wouldn't say the stars, the people, but the system. The The system. system, Yeah. the system actually does not allow us to be very creative. मैंने तो कभी स्टार्स के साथ काम ही नहीं किया. जब मैंने बैंडिट क्वीन बनाई थी, सब नए थे, और मैंने खास तौर से लोग ऐसे ढूंढे जो नए हों, जिन्होंने अपने आप को स्क्रीन पे ना देखा हो. जो मासूम बनाई तो नसीर और शबाना थे, स्टार्स नहीं थे बड़े. मिस्टर इंडिया बनाई तो अनिल कपूर, श्रीदेवी की एक फिल्म रिलीज हुई थी. फिर जब अमेरिका गया और लंदन गया, वहां भी केट ब्लांचेट की कोई फिल्म नहीं थी, नई लड़की ले ली. तो मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है स्टार्स के साथ काम करने का. और मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी स्टार्स को ऐसे लगता है कि भाई ये हमारा रथ है,
आप हमारे घोड़े हैं। तो कैसे बनेगी फिल्म, कैसे बनेगी? मुझे तो ऐसे लगता है जो सुशांत हमेशा करता था, वो सेट को पूछता था। ही वुड वर्शिप द सेट, ही वुड वर्शिप द आइडिया कि ये एक स्पेस है, दिस इज अ स्पेस इन विच हम आकर रिहर्सल कर रहे हैं। तो पहले ही यूज्ड टू बाउ डाउन टू दैट स्टेज कि आई एम योर्स, यू टेक मी। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, आई एम वनरेबल, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं रोल के सामने, मैं फिल्म के सामने, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं वो अदा कर रहा हूँ जो आपने मुझे दिया है, वो मैं बन रहा हूँ। यू नो, पता नहीं मैं क्यों सुन रहा हूँ लोग एरोगेंस 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 की बात कर रहे हैं सुशांत के बारे में। मैं तो देखता हूँ, लेकिन आई नेवर मेट समबडी सो हम्बल। इतनी ह्यूमिलिटी थी उसमें, इतनी ह्यूमिलिटी थी उसकी स्माइल में, ह्यूमिलिटी थी उसके बस आंखों में। मैं जो उसकी आंखें देखता हूँ तो इट इज अ चाइल्डिश ह्यूमिलिटी। वो शायद वहीं से है जब आप कह रहे हैं दोनों बाहर बिहार से आए, छोटे छोटे शहरों से या गांव से आए, and he came here with that humility. तो I just would like to remember him. Humility, टैलेंट क्या होता है यार? एक डायरेक्टर का टैलेंट क्या होता है? टैलेंट तो वो होता है जो आप पाए, टैलेंट तो वो होता है जो आप पीछे छोड़ पाए, टैलेंट तो वो होता है जो कहे कि ये मैं नहीं कर रहा, ये हो रहा है। और जिस दिन आप कह सकें कि ये तो हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, मैं तो केवल किसान हूँ, गार्डनर हूँ, मैं पानी दे रहा हूँ, ऊपर से धूप आ रही है और पौधा उग रहा है। क्रिएटिविटी ऐसी होनी चाहिए, है ना? मैं छोड़ जाऊं, मैं नहीं हूं। जिस वक्त आप कह सकें एज एन एक्टर, जो आपने किया बैंडिट क्वीन में, बैंडिट क्वीन इसलिए आज याद रखते हैं लोग, इसलिए आज याद रखते हैं कि आप सब लोगों ने अपने आप को छोड़ दिया, सबने अपने आप को छोड़ के कुछ और बन गए। आप नहीं रहे, कैरेक्टर भी इमर्ज हुआ। ये भी नहीं कि हमने बैठकर डिसाइड किया था ये कैरेक्टर ऐसा होगा, ये होगा। अभी मुझे याद है जब सीमा पहली बार आई मेरे पास, मुझे कुछ पता नहीं था बैंडिट क्वीन कैसे शूट करनी है। तो सीमा आई और मैं, बहुत बड़ी थिएटर एक्ट्रेस थी वो, अब मैं कुछ जाना पहचाना डायरेक्टर था। तो हमारी पहली मीटिंग हुई तो उसने असली सवाल पूछे कैरेक्टर के बारे में, ये कैसे होता है, ये इस कैरेक्टर का हाई पॉइंट क्या है, इसका लो पॉइंट क्या है, इसका ग्राफ क्या है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था सर कि फिल्म कैसे बनाऊं। तो मैंने सीमा से कहा, मैंने कहा सीमा एक काम करते हैं, तुम घर जाओ, कोई 1.5-2 पेजेस लिख के लाओ कि तुम क्या समझते हो कैरेक्टर के बारे में। तो समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। 250 लोग देख रहे हैं आपको, सर शॉट क्या है, आपको पता नहीं शॉट क्या है। तो आप एक्टर के पास ही जाते हैं, अरे भाई तुम क्या समझते हो शॉट क्या होना चाहिए। तो आपने दूसरे को प्रॉब्लम जी दे दी और खुद सोच रहे हैं, राइट? तो ऐसे मैंने सीमा से कहा तुम लिख के ले आओ। उसने 1.5-2 पेजेस बहुत बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखे। तो मुझे समझ में आ गया कि फिल्म कैसे बननी चाहिए। ये बैंडिट क्वीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने सीमा से कहा ये क्या लिखा आपने, जी एक काम करो 1.5-2 पेजेस में अपना कैरेक्टर लिख के आओ। कहती मैं अपने आप को 1.5-2 पेजेस में कैसे डाल सकती हूँ। तो मैंने कहा ये फूलन देवी जिंदा है, ये भी तो औरत है, ये भी है। 1.5-2 पेजेस में अगर आप अपने आप को नहीं डाल सकते तो किसी और को क्यों डालने की कोशिश। तब मुझे समझ आ गई, मैंने एक नया तरीका सीखा फिल्म बनाने का कि छोड़ दो एक्टर्स को, कैमरा को, सबको छोड़ दो और फिल्म बनने दो। जैसे खेत को उगने दो, एक फूल को ब्लूम करने दो, ऐसे करो। और जब मैं सुशांत से मिला, मुझे ऐसे लगा कि ये एक्टर भी वैसा ही है, ये सब छोड़ने को तैयार है, अपने आप को छोड़ने को तैयार है, सबको छोड़ने को तैयार है। लेकिन फिर बाकी मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये सबसे बुरी चीज ये हुई कि वो फिल्म बनी नहीं, वो मुझे सुशांत के साथ काम करने का चांस ही नहीं मिला। नहीं तो उसकी वजह से वो पानी कुछ और ही बन जाती थी यार, उसमें एक जान आती जी थी। जान कहाँ बिल्कुल। से आती है? जान तो ऑनेस्टी से आती है। तो फिर आप जब मैंने सोन चिड़िया देखी तो मैं आई जस्ट सॉ ऑनेस्टी एवरीवेयर इन योर परफॉर्मेंस, इन सुशांत परफॉर्मेंस। कोई झूठी चीज नहीं लगी मुझे
तो जब आप कह रहे हैं ना कि सामने जो एक्टर दिख परफॉर्मेंस में ही दिख रहा था, उसके परफॉर्मेंस दिख रहा था, एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे को अक्सर स्टार तो ऐसे ही करते हैं ना यार, वो जो शॉट देते हैं कहते हैं आगे से हट जाओ आगे जी से कैसे जी हट जी। जाओ, आपके सामने तो दुनिया है, अब कैसे हट जाओ. So I think मैं I just आपको want you to tell the एक बार से audiences what kind of. हाँ बोलिए. या व्हाट काइंड ऑफ या इसको नहीं, अब जो लोग हम लोगों को लेट ज्वाइन किए, मैं सिर्फ उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हम लोग एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं जी सुशांत को। हमारी मेरी और शेखर जी की बातचीत पहले होनी थी, 2 दिन पहले। फिर उसके बाद कल हमने तय किया था कि कल हम बातचीत करेंगे एक्टिंग के बारे में, क्राफ्ट के बारे में। फिर ये हादसा हुआ और ऐसी घटना घटी तो हमने सारा कुछ स्थगित कर दिया। फिर हमने डिसाइड किया कि आज के दिन हम सुशांत के नाम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उसके बारे में अलग अलग तरीके से बातचीत हो रही है, अ, वो मेरे ख्याल से उसके साथ न्याय नहीं है। वी आर नॉट डूइंग एनी जस्टिस टू द टैलेंट, टू द पर्सन दैट ही वाज। आई थिंक दिस इज दिस इज द टाइम दैट वी शुड ऑल ग्रीव by by really remembering the person that he was, by really acknowledging that the actor that he was, and sit down and think as to what all he's done in such a young age for the industry and for the people that he represented. I think I will ask this question to you, Shekhar. In your view, uh, what was his contribution? I mean, at the age of 34, 35, he left us. Uh, he left his family grieving, mourning, but at least we can actually, I can ask you, because since you could not direct him, you've done preparation with him, you've known him very closely as a person, also as an actor, since he was preparing for a role, and also you used to look at him from a distance and his career from a distance. What do you think was his contribution to this industry and to the world that he has come from? आई थिंक सुशांत ने यह जो फिल्में की हैं वो एक फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें लोग ये नहीं कहा कि जैसे आप अभी कह रहे थे धोनी के बारे में, धोनी लगा. So his contribution is a sense of reality that he brought to his films. And he was in a way a star. स्टार तो बन गया था वो. But what देखो, स्टार दो होते हैं. स्टार वो जो एक ही चीज बार बार दोहराते रहते हैं क्योंकि थिएटर में तालियां बजती हैं. दूसरा जो एक्टर स्टार होता है उसका काम बड़ा मुश्किल होता है. उसका काम कि वो तालियां बजे लेकिन कैरेक्टर्स पिछले कैरेक्टर से अलग लगे, सुशांत दिखाई ना दे. उसको स्टार कैसे बनाओगे? That's his contribution. He was on his way to reach a peak that you have now started to achieve. That stardom, और आपने जो फैमिली मैन वगैरह जो आपने किए और बैंडिट क्वीन और अलग अलग फिल्में जो आपने की, your stardom is not based on, look, I'm Manoj Bajpayee something. Your stardom is based on the audiences completely getting in tune with the character. तो ये सुशांत की at this young age उसकी contribution है कि आप जो फिल्म देखो उसमें ऐसे लगता है कि वो कैरेक्टर दिख रहा है आपको, सुशांत नहीं दिख रहा. और बहुत आगे जाना था रिसर्च में, बहुत आगे जाना था. ठीक है. What is it that मतलब ये क्या चीज है? मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ी बात हिंदी में भी कर लीजिए आपने. मैं हिंदी में सिर्फ पूछना चाहूंगा आपसे कि वो क्या चीज है पर्टिकुलरली जो आपको परेशान कर रही है इस समय, आफ्टर हिज funeral is done? And I'm very sorry for, first of all, I think both of us are not in Mumbai and could not go to his funeral. Three of our industry people funeral, which is so sad, so sad. But coming to Sushant,
दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क यू कि आपको क्या चीज है जो परेशान कर रही है अभी सुशांत को लेके? परेशान तो वही चीज कर रही है कि जो मैंने नहीं किया वो परेशान कर रहा ना। दो चीजें जी हैं। चलो, पानी प्रोड्यूसर्स ने कहा हम नहीं बनाएंगे सुशांत के साथ, नहीं बनाएंगे, पानी नहीं बनी। कुछ और फिल्म कोशिश करके बना लेता, वो नहीं किया, मैं बाहर चले गया, हिंदुस्तान से बाहर चले गया, गुस्सा, नाराज हो गया, मैं गया। और दूसरा दूसरा कि हमेशा ऐसे लगता है कि अगर 6 महीने से मैं सुशांत को नहीं मिला, फोन वोन करता था कभी, तो वो जो हमने नहीं किया वो हमेशा याद आता है। घर चले जाता, बैठ जाता, कभी सुशांत के साथ बैठे कोई बातचीत करने की जरूरत ऐसा नहीं लगता थी अब क्या बात करें। अगर फिल्म की बात या एक्टिंग की बात या कहानियों की बात नहीं होती थी तो क्वांटम फिजिक्स की बात होती थी। इतना नॉलेजेबल था वो। नहीं तो वो अपना टेलीस्कोप लेके बैठ जाता था, वो दिखाता था। खैर, बम्बई शहर में टेलीस्कोप इतनी पोल्यूशन थी तो ज्यादा कुछ दिखता नहीं था। तो जो आप पूछ रहे हैं मनोज, वो यही है। याद तो वही आता है कि जो नहीं किया, एक भाई की तरह यही होता ना, फैमिली की तरह। मैं क्यों नहीं था वहां, मैंने क्यों नहीं कॉल फिल्म की, मैंने क्यों नहीं फोन किया, मैं क्यों नहीं मिलने गया, यही सब याद आता है अभी तो, है ना। तो जी दुख दुख आता है कि नहीं किया, वो हमेशा ऐसे होता है। दुख आता है, दुख हो रहा है, थोड़े दिन के बाद फिर बैठ जाएंगे इकट्ठे, हम दोनों बैठेंगे, फिर सुशांत की पिक्चरें देखेंगे, तो कहेंगे देखो यार ये देखिए इतना कमाल कर किया इसने, ऐसा भी कमाल कर दिया उसने। वो हमें करना चाहिए और सुशांत की याद ऐसे करनी चाहिए। सुशांत की सारी बातें तो मुझे याद हैं। बहुत गहरी बातें करता था और हंसता खूब था। फिर हमने कुछ साथ में कॉन्फ्रेंसेस की थी, उसके सब वीडियोस हैं। जी तो ठीक है यार, अब लेट्स जस्ट रिमेम्बर। एक बार फिर मैं भी बोला, आपने भी बोला कि, तो कमेंट्स भी देख रहा हूँ, ये हमारा इज द रीजन ये करने का कि सुशांत को एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग याद करो। अल्टीमेटली ये जो ड्रामा ऑफ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या चल रहा था उसके मन में, कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये सब बातें बह जाएंगी नदी की तरह। जैसा होता है ना, नदी साफ चल रही है तो उसमें कुछ जी कुछ चीजें आती है, वो बह जाएंगी तो साफ पानी दिखाई देगा। वो जो साफ पानी है नदी का, जो नीला पानी है, वो सुशांत दिखाई देगा फिर। मैं जो कल से जो मैं अपने सर, वो आपका नेटवर्क लगता है कि थोड़ा गड़बड़ जा रहा है एंड थोड़ा आपका पिक्चर हाँ, हेजी हो रहा है, मैं तो उसको पहाड़ों जरा में बैठा ठीक कर हूँ तो। लीजिएगा जरा सा। हाँ। जी मैं कल से जो बहुत परेशान, आपसे बात भी हुई थी, काफी उदास और वेरी हार्ट ब्रोकन। आई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तब्बू से बात कर रहा था, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। मैंने कहा कि यार ऐसा लगता है कि यार ये लॉकडाउन खत्म होगा और जब वापस जाएंगे तो ये तीनों लोग आ जाएंगे whom we lost when we were not there, you know। कुछ या इस तरह से, या इस कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि या आई एम hallucinating about all of these incidents that has been happening, या and for Sushant too. I mean, till the evening, when after I spoke to you also, till the evening I could not believe कि ये सच है। और फिर शाम को मैं बहुत ही खोया खोया रहा, and my family kept on asking me, where are you, though they know that I was fairly disturbed. um, Even my wife said that it's his image is not living. This incident is not leaving my mind, though she's not connected. What is it about this incident that is making people so angry? I'm seeing Twitter, Instagram, social media. People are angry. Why they are angry, Shekhar? Why they are angry? There must be a reason why they are angry. There can't be one thing. They must be saying one thing, but there's a reason behind this anger. What is या this anger coming from?
I think the anger is coming from the recognition of people like you who are now showing to the world that this stardom that we imagine stardom, जैसा हम सोचते stardom है, वो असली stardom नहीं है। और वो क्योंकि वो असली stardom नहीं है, तो गुस्सा इसलिए आ रहा है कि बाकी लोगों को क्यों नहीं फिर चांस मिल रहा ऐसा जैसे आपको मिला। ये एक गुस्सा है जो मैं समझता हूँ आ रहा है। बट व्हाट यू फीलिंग, कल रात को मैं जहाँ हूँ वहाँ काफी लोग थे और सब बात कर रहे थे सुशांत के बारे में, और मैं चाह रहा था सब चले जाओ थोड़ी देर। मैं पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लग रहा था कि सब चले जाओ। तो जब सब गए तो फिर बैठ कर खूब रोया, किसी के सामने नहीं रोने लगा, फिर खूब रोया मैं रात को। फिर गुस्सा आया कि ये ऐसा क्यों हुआ सुशांत के साथ। गुस्सा आता है यार, दुख होता है तो गुस्सा भी आता है। जब दुख होता है तो किसी को ब्लेम तो करना ही पड़ता है ना जी, क्योंकि नहीं तो ब्लेम अपने आप पर लेना पड़ता है। हमारी आदत ही है ये कि अगर किसी और को ब्लेम नहीं किया तो फिर वो ब्लेम अपने आप खुद पे आ जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपने पूछा कि आपको क्या लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ कि और नहीं किया और कोशिश नहीं की। अगर इतना ही बड़ा टैलेंट है जितना हम दोनों मान रहे हैं, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? क्या उस समय जब ऐसा हुआ पानी नहीं बनाई उन्होंने, तो ठीक है भैया पानी नहीं बनाई, हम कुछ और ही बना रहे थे नहीं। लेकिन ऐसी सब बातें आती रहती है मन में, एक दिन बैठ जाएंगी। वो क्या था ना, मैं अंग्रेज में बोलता हूँ, मेमोरी इज नॉट अ ट्रू फ्रेंड। मेमोरी इज नॉट अ ट्रू फ्रेंड, कि वो जो हमें याद आती हैं प्यार की बातें, कि जब वो बातें हुई थी तो प्यार की होती हैं, वही बातें जो प्यार की थी वही मोमेंट्स अब दुख के हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है कि प्यार दुख में बदल जाता है? और जब प्यार दुख में ऐसे बदल जाता है, वही इंसिडेंट, ऐसे आपने स्नैपशॉट ले लिया, उसका मूवी ले लिया, हंस रहे दोनों बैठे, अरे कितना प्यार है कितना प्यार है, अब दुख है। तो ये जो प्यार से दुख होता है, इसको कंटेन करना बड़ा मुश्किल है यार, इसको कंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो दुख है ये आहिस्ते आहिस्ते फिर प्यार में बदल जाएगा, फिर गुस्सा कम आएगा, और फिर सुशांत की जो यादें हैं अलग होंगी पर प्यार भरी फिर होंगी। अभी तो दुख भरी हैं, फिर प्यार भरी हो जाएंगी। मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुस्सा जो आम जनता को आ रहा है, उनको एक अपना एक ऐसा हीरो दिखा था सुशांत में जो उनके बीच से आया था, और सडनली जो उनको लग रहा है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन था, जो कहीं ना कहीं उनको वो एक होप दे रहा था, आशा दे रहा था कि उनके बीच का लड़का अगर इतनी दूर जाता है और इतनी ऊंचाई पे जाता है तो उनके लिए भी वो होप है। और सुशांत का अचानक इस तरह से चले जाना, कहीं ना कहीं उनको ये बात, इस बात से वो बड़े बहुत ज्यादा रूठ गए हैं बहुत ज्यादा। वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। जी बहुत ज्यादा रूठ गए हैं, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा इसी बात का आ रहा है, और बहुत ज्यादा दे आर शॉक्ड लाइक ऑल ऑफ अस, दे आर शॉक्ड। सो एंगर इज, आई थिंक ऑल्सो, it's a way of emoting, way of grieving, way of showing way of showing their own loss. So well, Shekhar, before we wrap up, let's talk on one or two things. First of all, क्या है सुशांत में, क्या देखा था आपने जो हम एक्टर्स को अपने अंदर इनवाइट करना चाहिए? क्योंकि हर एक्टर के पास में एक यूनिक चीज होती है, बिल्कुल। मुझे हमेशा लगता है कि एक एक्टर जो अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी जर्नी के बाद वो एक ऐसी चीज लेके आता है जो बाकी एक्टर्स को मिल सकती है, वही चीज उसको यूनिक बनाती है। देखो, सुशांत को जब मैंने पानी में कास्ट किया था तो मैंने दो उसकी चीजें देखी थी। एक तो काइपोच है जी, और दूसरा उसने एक पेप्सी का ऐड किया था। हाँ, दोनों देखा।
जी दोनों में एक सिमिलैरिटी थी, दोनों में एक एक वो एक रेस्टलेसनेस था कि ऐसा लगता था कि जैसा होता है ना, एक स्प्रिंग आपने ऐसे करके बंद करके रखा है कि ये जो आदमी है ये कभी भी उछल जाएगा, इससे अनप्रिडिक्टेबल है ये, बिल्कुल राइट बिल्कुल राइट। जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी जो दोनों फिल्मों में थी, कि यार जी पता जी नहीं जी। अभी क्या कर, पता नहीं कैसे अभी क्या क्या बोल कर, देगा, हाँ अब पता नहीं क्या कर जी देगा। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, अगर ये स्क्रीन पर आ जाए, जो मुझे गोरा में चाहिए थी, जो गोरा कैरेक्टर पानी का, बिल्कुल सुशांत था, बिल्कुल जी सुशांत। तो एक तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही क्रिएटिविटी होती है, जी जिंदगी ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, बिकॉज अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही क्रिएटिविटी होती है। और दूसरा, उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी में बचपना था। हम्म। एक तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है बहुत, एक किस्म की, यार मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं नाराज हूँ यार, पता नहीं कब आदमी ये कब गन उठा के किसको बना दे, दूसरी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में एक इनोसेंस था, एक बचपना था। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, पता नहीं कब कुछ कर देगा, ये बैठा है बैठा है ऐसे टॉक करके कुछ कर देगा, उसमें एक बचपना, और उसमें एक मासूमियत। मासूमियत, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और बचपना, ये जी तीन चीजें उसमें मैंने देखी, और मैंने कहा कमाल का है ये कहाँ से मिल गया मुझे, आई एम लकी। राइट नहीं। राइट राइट। काइपोचे में या बहुत ज्यादा ये चीज दिखी थी उसके बारे में। हाँ And this is what people got so attracted to. या Though Rajkumar Rao was brilliant in it, and Amit Sad या was equally good, but these या are the qualities of Sushant attracted everyone towards him. All I would say, Shekhar, that thank you very much for really offering, for really coming up this idea of this kind of a Shraddhanjali to our dear Sushant, and and really coming over to talk about him, all good things about Sushant, and what all we should learn from his journey and from his craft and from his या humanity, from the person that he was, all the good things या that we can remember about him. या And या also, या we should not forget that this man started from nowhere and reached on the top. So या his journey is going to बिल्कुल सर। be quite inspirational for every one of us. What do you say? You wrap it up. सुशांत को तो सब याद रखेंगे, जैसे जो लोग इतने टैलेंटेड होते हैं और जिनकी जिंदगी बहुत ऐसे छोटी उम्र में कट जाती है, तो उनको तो हम बहुत याद, जॉन कैनेडी को याद करते हैं, हम जेम्स डीन को याद करते हैं, हम अपना इसका हीथ लेजर को याद करते हैं। इसी कैटेगरी में हम याद करेंगे, और इसी कैटेगरी के में हमको याद रखना पड़ेगा ये सब बातें, जो ड्रामा है, और सुसाइड क्यों किया, और डिप्रेशन की बात। एक बार हमको डिप्रेशन की बात एक और बात करनी चाहिए, कि ये क्या जी सही लोग कहते हैं कि हमारी क्रिएटिव कम्युनिटी में डिप्रेशन ज्यादा होता है? हम तो पुश करते हैं, मैं तो कहता हूँ, मैं तो अपने आप को स्किज़ोफ्रेनिक बना देता हूँ जब फिल्म बना रहा हूँ, पर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लेकिन उसकी फिर एक बात बात करनी चाहिए हमें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत सवाल आ रहे हैं, जी जी और जी। Yeah, मेरे please, तो उसके बारे में yeah, करनी चाहिए। shed a light on it. Yeah, ठीक। shed a light on it. This is our program, sir. This is not a TV channel या where we या can just या go on या talking about तो unnecessary आई things. थिंक Yeah, next time we'll talk again, we'll set up yeah, another call definitely. and we'll talk Yeah. really about So, really what is it that depression is. Manoj, been so what pleasure, do you let's want to tell? continue What do you doing want this to यार, तुमसे tell? बात करने में बहुत मजा आ रहा Yeah, है। what do you want to tell it? What do you want to tell his family who's grieving right now, Shekhar? I want to tell his family that we loved him as much as they did, and we are Yes. as Yeah. shocked, grieved, sad, hopeless, without we are as misunderstanding this whole thing as they must be, कि ये क्यों हुआ, वैसा हम फील कर रहे हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल हमको भी वैसा ही लग रहा है जैसे उसके पेरेंट्स को लग रहा है, उसकी फैमिली को लग रहा है कि यार ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, हम वैसे ही रो रहे हैं जैसे वो रो रहे हैं। तो आई जी वांट टू नो, जी आई बिल्कुल वांट देम बिल्कुल। टू नो, जाने
कि पूरी जो लोग असली लोग हैं ना, फिल्म देखते हैं, लोगों को स्क्रीन पर देख पाते हैं और जान पाते हैं, जांच पाते हैं, वो लोग भी इतना ही रो रहे हैं जितना उसके फैमिली रो रही है। जी बिल्कुल। अब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, हम उतने ही दुखी हैं, हम उतने ही रो रहे हैं, हम उतने ही स्तब्ध हैं हाँ, और शॉक्ड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, और हम उनके साथ बिल्कुल। इस दुख की घड़ी में बिल्कुल साथ हैं। उन्होंने अपना बेटा खोया है, और इस दुख की घड़ी में हाँ, हम सब के सब उनका हाथ पकड़े हुए हमने हैं। अपना हम भाई भले ही खोया। वहां नहीं हैं, हमने अपना भाई हाँ, खोया है, अपना साथी खोया है। इसी के साथ हम्म, हम इतना कहते हुए हम्म, कि उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, हम इस बातचीत को यहीं बिल्कुल। खत्म करेंगे। शेखर, थैंक यू शेखर, थैंक यू ओके, वेरी मच। थैंक यू।